Hello students. So in this particular video, I'm going to teach you how to use angle properties in this type of sums. Okay. So just stay connected, stay tuned. You may feel I'm going really fast, but it's nothing like it. Once you would be expert or once you'll be knowing all the angle properties, even you will feel, oh wow, that's so simple and that's so superb and that's so easy to do. Okay guys. So let's see यहाँ पर देखो यहाँ पर एक जो diagram दिख रहा है ABD. अगर आप ये ए बी डी देखते हैं तो यहाँ पर जो x है वो ढूंढना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू, I'll get this angle d. If I'll get this angle d, it's very simple to get the value x, isn't it? So देखो यहाँ पर अगर एंगल c 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री बन जाएगा, isn't it? If this is 50 and then this is 42, so 50 plus 42 92 बन जाएगा. तो this angle x will become 180 माइनस ये 92, तो ये बन जाएगा 88 डिग्री. इजंट इट वेरी वेरी सिंपल? बट आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको प्रॉपर्ली लिखना है एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB बिकॉज बोथ एंगल्स आर सबटेंडेड बाय आर्क AB and angle subtended by the arc at circumference are always congruent. And then in triangle ABD, one angle is x, another is 42 and third one is 50. So add summation of all the three angles of the triangle is 180 degree. वो पूरा पूरा अच्छे से लिखना है, फिर आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे. So x is equal to 180 minus 92, which is 88 degree. This is how I'm teaching you at the moment how to think mentally. Okay, once you'll be knowing how to think mentally, I guess the writing part anytime can be worked out. Okay, so suppose this is 32 degree, even this angle B will going to be 32 degree, isn't it? See, yes, strike होना चाहिए angle A. Okay, angle ACD is equals to angle ABD because both are subtended by arc AD. So if this is 32 degree, when this will going to be 32 degree. Follow strictly my cursor, guys. So in triangle ABD, if this angle is x, this is 45 and this is 32, how are you going to get x? Same way, 180. देखो 180 जैसे यहाँ पर किया था, 180 minus 77 minus 77 sat property, sum of all angles of the triangle is 180 degree. So 180 minus 77 कर दे तो 113 something आ जाएगा. Okay, 103 degrees. Now next one, लुक एट दिस. हमको यहाँ पर x कैलकुलेट करना है, तो देखो यहाँ पर अगर ये 20 डिग्री रहेगा तो इवन ये 20 डिग्री बन जाएगा बच्चों. क्यों? बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, दिस इज द आर्क. सो द angle subtended by the same arcs at the circumference are always equal. See, everywhere I'm using the same property. Angle subtended by the same arcs are always equal. So यहाँ पर भी वही property use किया है. देखो ये 20 है तो ये भी 20 बन जाएगा. So 20 plus x is equal to 90 because exterior angle is always equal to sum of its remote interior angle. Or else you can do over here, this is 90 degree. So ये 90 बनेगा तो ये दोनों भी angle 90 ऐड होने चाहिए. So x plus 20 is equals to 90. यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, एक्सटेरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल. सो x बन जाएगा 70 डिग्री. आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग. वंस विल बी नोइंग द प्रॉपर्टीज, ऑल द एंगल प्रॉपर्टीज अगर आपके क्लियर रहेंगे तो ये सम सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, बहुत आसान होता है. और बेसिकली ये जो सम होते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क के लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको 10th स्टैंडर्ड के पेपर में मिल जाएंगे. जबकि ये टॉपिक बहुत ईजी है अगर आपको ये सम्स बहुत अच्छे से सॉल्व करने को आते हैं तो. सो देखो यहाँ पर अगर अभी मुझे ये फोर्थ वाले डायग्राम में यहाँ पर x ढूंढने थे. देखो ये 31 डिग्री है. अगर अच्छे से देखते तो एंगल ACB 31 डिग्री दिया है, ये एंगल B पूरा का पूरा 69 दिया हुआ है, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा. दैट एंगल A विल गोइंग टू बी 180 माइनस दिस से सपोज 100 डिग्रीज. सो ये बन जाएगा 80. सो x विल बिकम 80 गाइस, इजंट इट? इट्स वेरी सिंपल गाइस. सो चलो यहाँ पर आते हैं सम नंबर 5 में. देखो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी देखो यहाँ पर 120 डिग्री बोला गया है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके ले लेंगे. देखो ये अभी ये सेंट्रल एंगल तो नहीं हो सकता है क्योंकि हमको पता नहीं है कि वेयर एग्जैक्टली द सेंट्रल एंगल है, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल इज. बट दिस इज एक्सटर्नल एंगल तो जरूर हो सकता है. अगर ये 120 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये angle A will going to be x and that will going to be 50 degree, isn't it? If this is 50, even this x and this x will going to remain same because angle CAB and angle CDB both have been subtended by the same arc BC, isn't it? So that's how these sums are really simple guys. See, look at this. अगर ये x है तो ये भी x बन जाएगा and ये x plus 70 will become 120 degree, isn't it? x plus 70 is equals to 120. So x is equals to 50 degree. So easy guys, isn't it? So easy, so easy, so simple sums. Okay, now I'm just choosing this diagram. देखो यहाँ पर हमको x ढूंढना है, तो ये x कैसे लेके आएंगे? देखो बच्चों, सो अगर ये 25 है, एंगल DCB अगर 25 है तो DAB
भी 25 ही बन जाएगा। क्यों? बिकॉज दे आर सबटेंडेड बाय आर्क बी डी। ना अगर ये 25 ये 35 तो x कैसे ढूंढेंगे? x इज एन एक्सटीरियर एंगल, x is an exterior angle of the triangle, so exterior angle of the triangle is equal to sum of its remote interior angle, so that will become 25 plus 35. I know guys, it's really simple. You must have enjoyed watching this entire thing so easily and so simply. I did all the exams within 6 minutes or maybe within 3 minutes. So similarly, अगर आपके properties आपके दिमाग में बहुत clear रहेंगे तो आपका भी work इतने ही fast हो जाएगा. Let's see few more sums. But before that, I would like to tell you, just pause this video over here and copy paste all these sums quickly in your book, guys. Copy paste this all this sum number 2, question number 1 to 6 quickly in your book. Hurry up, guys. I'll wait. So students, I hope you finished writing that, and now we'll move to the question number 3. If O is the center of the circle, so everywhere O is the center of the circle, guys, okay? Find the value of X in each of the following figures using this given information. Okay, now once again, we'll have to use the angle properties everywhere, people. Just try and do by your own. If you could do, you can pause video over here and you can try figuring it out, all these X. And if you could figure that out, that's really nice. And then you can start the video. Okay. So let's see how to do these particular sums. Okay. See, suppose अगर ये 40 degree है, अगर हमको ये x ढूंढना है, तो how we going to do this? See guys, understand when they have mentioned that O is the center, that means this will become 90 degree, isn't it? Angle ABC will become 90 degree. Reason? Because diameter subtends a right angle at the circumference, or else angle subtended by the semicircle is always right angle. तो अगर ये 40 है, ये 90 है, तो ये बन जाएगा 50. You got it guys? ये बन जाएगा 50. Once you're going to get this as 50, ये x बन जाएगा 50 degrees. You understood that? So simple. So x is equals to 50 degree. I hope you understood that, because angles subtended by the same arcs at the circumference are always congruent. Now how to get these x? Let's do part 2. So suppose ये 62 है and ये center है, so एक चीज यहाँ पर समझना पड़ेगा. से suppose अगर ये A है, ये B है, so OA is equal to OB, that means this and these are equal because the radius of the same circle. So अगर ये 62 है तो ये भी 62 बन जाएगा बच्चों. अगर ये 62 है तो ये x भी 62 बन जाएगा. Reason? Angles subtended by the same arcs at the circumference are always equal, isn't it? So ये x बन जाएगा 62 degrees. I hope you understood this. It's really simple guys. Now look at this. अगर हमको ये x ढूंढना है तो हमको ये करना पड़ेगा, पहले ये एंगल ढूंढना पड़ेगा. So how we going to do that? See, look at this. You can figure it out from here. अगर ये 80 है, ये 130 है, ये total बन जाएगा 210 degrees. If this is total 210, this total supposed to be 360. So 360 minus 210 कर दे. 360 minus 210 will going to become 150. अगर ये 150 बन जाता है, so ये x, ये जो x है वो बन जाएगा 75 डिग्री. ये x बन जाएगा, x is equals to 75 degree. I hope you understand that. It's really simple guys. Reason? Central angle is double the angle at circumference, or the angle at circumference is half the angle at center if it is subtended by the same arc, isn't it? That's how this topic is really simple guys. So only one term and condition. Your property should be very clear guys. Look at this. अभी हमको ये x ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे ये वाला x? Simple. अगर ये 75 है तो ये बन जाएगा 105. Linear pair angles are supplementary. So अगर ये 105 बन जाता है, x will become 210. X will become 210 degrees. Isn't it very simple? X will become 210. Why? Central angle is double the angle at circumference if it is subtended by the same arc. Next thing, how to find this x? This is really tricky guys. Just stay tuned and perfectly listen very carefully. See देखो, ये अगर है 135 तो ये बन जाएगा 45 degrees. Linear pair angles are supplementary. Once you're going to get this x as 45, तो ये x बन जाएगा 45/2. 45/2 बन जाएगा 22.5 degrees. 22.5 degrees. I hope you understood this. How to calculate this x, isn't it? Once you'll get this x, let's move to the next question. Okay, यहाँ पर देखो अगेन ये सेंटर ऑफ द सर्कल है O, ये 70 डिग्री दिया गया है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 35 डिग्री. देखो ये स्ट्राइक होना चाहिए गाइज. ये स्ट्राइक होना बहुत चैलेंजिंग पार्ट है. आपको बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन स्किल होना चाहिए और तभी जाके ये स्ट्राइक होगा स्टूडेंट आपको. सो देखो अगर ये 70 डिग्रीज है तो ये बन जाएगा एंगल एट सर्कमफेरेंस is half the angle at center if it is subtended by the same arc. Follow my cursor. Angle at center or angle at circumference is half the angle at center
इफ इट इज सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, तो अगर ये 70 रहेगा तो ये बन जाएगा 35, और ये 35 प्लस एक्स बन जाएगा, 35 प्लस एक्स बन जाएगा 90. एक्सटर्नल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल. सो एक्स बन जाएगा 90 minus 35, and 90 minus 35 will become 55 degrees. I hope you understood that all the 6, and I guess अगर आपने pause किया रहेगा, अगर आपके all 6 correct आते, that means your properties of the angles are really really cool, and you will get very easily or all 3 marks in your examinations. Thank you for watching this. Let's move ahead. Here you can pause your video again and copy paste this all these 6 sums quickly in your book, guys. I want all these 6 sums to be in your book only. So pause it.